Hello dear students, I Rahul Mishra and today I will discuss about intensive and extensive properties. So what are intensive and extensive property? First we will discuss about intensive properties. So those properties which does not depends upon the quantity of substance are called as intensive properties. It means ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन से टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स etc. इनके एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकते हैं. और वी कैन से इन अनदर वर्ड्स व्हेन वी डिवाइड सिस्टम into two smaller part. It means अगर हम किसी सिस्टम को दो छोटे छोटे पार्ट में बांट दें then those properties which does not change. It means तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चेंज नहीं होती हैं then that properties are called as intensive properties. तब वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल if you have 1 liter water in a container and if you divide it into two smaller part or if you divide into two half liter container of water, it means अगर आपके पास 1 लीटर वाटर का कंटेनर है और उसमें वाटर है और आप अगर उस 1 लीटर वाटर के कंटेनर को दो हाफ लीटर वाटर के कंटेनर में डिवाइड कर लें then density of water will remain same in both container and it does not change. It means जो वाटर की डेंसिटी होगी दोनों ही हाफ लीटर के कंटेनर में वो सेम रहेगी. It means density is an intensive property. Now we will discuss extensive properties. So what are extensive properties? So those properties which depends upon the quantity of substance are called as extensive properties. It means ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी सिस्टम की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से mass, volume, energy, all these are extensive properties. Or we can say in another words when we divide the system into two smaller part then those properties will get changed are called as extensive properties. It means अगर किसी सिस्टम को दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चेंज हो जाती हैं then that property will be called as extensive properties. तो ऐसी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम 1 लीटर कंटेनर में वाटर लें और उसको हाफ लीटर वाटर के कंटेनर में बांट दें तो वाटर का मास अलग अलग कंटेनर में अलग अलग होगा एंड देयर विल बी आल्सो चेंज इन देयर वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा. इट मीन्स मास एंड वॉल्यूम विल गेट चेंज. सो बोथ दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. इसलिए मास और वॉल्यूम क्या हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव. इट मीन्स किन्हीं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है. इट मीन्स वी कैन से इफ वी डिवाइड मास एंड वॉल्यूम, अगर हम मास और वॉल्यूम को डिवाइड करें सो मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, देन मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो विल गिव डेंसिटी and we all know that density is intensive property.
So the ratio of two extensive property will always be intensive. Now we will discuss about physical change. So those change which involve the change in physical state, it means ऐसे change जिसमें किसी substance की physical state में change होता है, then that change will be called as physical change. For example, ice to water. When ice get changes into water, ice is a solid and water is a liquid, so there is change in physical state. Now we all know that chemical composition of substance does not change into it. It means physical state के केस, physical change के केस में किसी भी substance की chemical composition change नहीं होती है. For example, ice, it is H2O in solid state, and water, it is also H2O, but it is in liquid state. So ice to water conversion. So in this case, ice is made up of 2 hydrogen and 1 oxygen, and water liquid, it is also made up of 2 hydrogen and 1 oxygen. So there will not be change in chemical composition. So chemical composition does not change in case of physical change. Only there will be change in physical state. Now it is generally reversible. So this change is generally reversible. It means it can occur in forward as well as backward direction. So ice to water is called as melting, and water to ice is called as freezing. Now next change is chemical change. So in this change, one substance changes into other substance. It means एक ऐसा change जिसमें कोई एक substance किसी दूसरे substance में change हो जाए, then that change will be called as chemical change. So ऐसा change जिसमें कोई एक substance किसी दूसरे substance में बदल जाए या change हो जाए, तो वो chemical change कहलाता है. It may be reversible or irreversible. ये reversible और irreversible दोनों तरह का हो सकता है. Chemical composition of substance get change into it. It means इसमें chemical composition substance का change हो जाता है, and it involves a chemical reaction, और इसमें chemical reaction involve होती है. And we can understood it from the following reaction also. In this reaction, when carbon get combust, जब कार्बन को जलाया जाता, then it converted into CO2 gas, तब ये CO2 में change हो जाता है. So we can see there is change in chemical composition. There is carbon, but there are carbon and 2 oxygens. So in this case, carbon get change into carbon dioxide. So there will be change in chemical composition also, and one substance get changes into other substance by chemical reaction. So this type of change is called as chemical change. Thank you.